अस्सलामुअलैकुम। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं और हमारे टॉपिक जो है इस वक्त हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑन सैचुरेटेड कार्बन जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम लोग जो चीज़ डिस्कस कर चुके हैं वो हमने इससे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होती हैं और उसमें जो बेसिक टर्म्स यूज़ की जाती हैं जैसे सबस्ट्रेट, जैसे न्यूक्लियोफाइल, जैसे लिविंग ग्रुप और इस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज के दिन जो है वो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा शुरू करेंगे और ये है मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जैसा कि आप लोग जानते हो कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के सैचुरेटेड कार्बन पर दो मैकेनिज्म हैं, जिनमें से एक मैकेनिज्म के लिए हम लोग जो है वो Sn1 मैकेनिज्म का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं और दूसरे के लिए हम लोग जो है वो Sn2 का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इनके मतलब अब जो है वो हम लोग स्लाइड्स से डिस्कस जो है वो करना शुरू करती हैं। ये हमारे पास स्लाइड्स हैं जिसमें मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमारे पास जो है वो टॉपिक है। पहले मैं लेजर पॉइंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये हमारे पास जो है वो मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इसके मतलब हम लोग जो है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन मैकेनिज्म का। सेवरल डिस्टिंक्ट मैकेनिज्म्स आर पॉसिबल फॉर न्यूक्लियोफिलिक एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक substitution reactions depending on substrate, nucleophile, living group, and reaction conditions. With the change in reaction conditions, by the change in substrate molecular structure, by the change in nucleophile, size of nucleophile and its nucleophilicity, ये different parameters जो हैं वो different results जो है वो लेकर आती हैं और उसके नतीजे में different mechanisms are possible. In all cases, the attacking reagent carries the electron pair with it, so that the similarities are greater than the differences. Therefore, on broader cases or on broader classification, we classify mechanisms into two categories, and these are known as Sn1 and Sn2 mechanisms. इसमें हम लोग जो है वो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं और नेक्स्ट हमारे पास है Sn2 मैकेनिज्म। डिजिग्नेशन Sn2 स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। यहाँ पर बाई मॉलिक्यूलर की टर्म बुनियादी तौर पर जो है वो रिप्रेजेंट करती है टू मॉलिक्यूल्स आर participating in rate determining step. In this mechanism, there is a backside attack. हम देखते हैं कि पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल जिस जगह पर मौजूद है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल उसकी अपोजिट साइड से अटैक जो है वो कर रहा है। द न्यूक्लियोफाइल अप्रोचेस द सबस्ट्रेट फ्रॉम द पोजीशन 180 degree away from the living group. X is living group while Y is attacking nucleophile. And we are observing that attacking nucleophile is attacking from opposite side or from at 180 degree from the already attached nucleophile or living group. Reaction is one step process. इसमें एक स्टेप प्रोसेस है with no intermediate. There is no intermediate in this process. Single step. The carbon and Y bond is formed as the carbon X bond is broken to generate transition state 1. We observe that it is 1, that is transition state. In this situation, whenever Y attacks on the carbon atom and living groups start living, we observe this type of state
This state is known as transition state. This state is known as transition state. This is for a while or for a smaller instant, after which this compound convert into products, and as a result a living group leaves the substrate molecule, and here should be Y. Here should be Y. Living group leaves and incoming group joins, or the substrate molecule attached with the substrate molecule. Next is, in next process we discuss energy necessary to break the carbon and living group bond is supplied by the simultaneous formation of C and incoming bond. We know bond breaking is an endothermic process. Energy is needed for this purpose, and we know bond formation is an exothermic process and energy is released during this process. Therefore, energy required for breakdown of CX bond is supplied by the simultaneous formation of CY bond. Position of the atom at the top of the curve of the free energy of the activation is represented as transition state 1. इस मकसद के लिए हम लोग जो है ये नेक्स्ट सिचुएशन या नेक्स्ट पेज से एक पैराग्राफ, एक फिग जो है वो देखते हैं. दिस फिग इज टेकन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिटन बाय क्लेडन. ठीक है, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एट स्टार्टिंग पोजीशन energy of reactants is lower, and whenever two molecules collide with each other, as a result transition state creates. This transition state has higher energy as compared to reactants, and just after a second or less than a second, molecule breaks down or convert into products. As a result, methyl group nucleophile attacks with the methyl group, and living group leaves the molecule. In this process, we observe energy change from lower to higher energy change, and then decrease in energy, and we observe that energy of products is less than that of energy of reactants. ठीक है, and as a result molecule gets more stability, and most of reactions are to gain extra stability. Here we discuss again the position of the atom at the top of the curve of free energy of activation is represented as transition state 1. This is transition state 1. You can observe transition state. यहाँ पे मैं 1 जो है वो इसके अंदर लिख देता हूँ, transition state 1. And next is reaction does not stop here. Since this is the transition state, the X group leaves. X group leaves and the Y group comes in. Because at no time carbon have more than 8 electrons in its outer state. तो रीजन क्या है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कार्बन अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रख सके. इसलिए जैसे जैसे x जो है जैसे जैसे y जो है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ ज्वाइन करता जाएगा, वैसे वैसे x जो है वो वहां से निकलता चला जाएगा, और किसी भी टाइम पर कार्बन एटम जो कि सेंट्रल है उसके न्यूक्लियस के इर्द गिर्द या उसके वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 8 से ज्यादा नहीं होंगे. तो ये फिग जो है वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली. इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज अटैकिंग and leaving group is leaving. As a result, transition state is formed, and this transition state convert into product. And next is, it is progress of reaction, that is with the passage of time, and this side is representing energy state. Low at this level energy is lower, and at this level energy is higher. We observe that energy is changing from lower to higher levels.
and with the passage of time then from higher to lower levels, and at the completion of reaction energy of products is less than that of reactants as well as transition state. Next है, at transition state, the central carbon atom goes from initial sp3 hybridization to sp2 hybridization with an approximate perpendicular p orbital. यहाँ पे आप इस मॉलिक्यूल को देख सकती हैं. At the start of reaction, this carbon is sp3 hybridized, and you can uh, understand this by the stereochemistry of molecules. You are observing this molecule is tetrahedral in shape, and we know that tetrahedral shape is achieved when carbon atom has sp3 hybridization. And in this transition state, we observe this type of situation or this type of structure in which carbon atom is sp2 hybridized and one p orbital is empty. And we also observe that at this stage, X is attached with one lobe of p orbital, and incoming nucleophile is attached with the second lobe of the p orbital. And in the next state, when living group leaves the molecule, living group leaves the molecule, substrate molecule attains the sp3 hybridization. But in this process, we observe that incoming nucleophile is attached on the opposite side of the leaving group. ठीक है. और इसके बाद है one lobe of this p orbital overlap with the nucleophile and the other with the leaving group. And next is, this is why a front side Sn mechanism has never been observed. क्योंकि p ऑर्बिटल की एक दोनों लोब्स एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो एक लोब के साथ अगर लिविंग ग्रुप अटैच है तो दूसरी लोब जो अपोजिट साइड पर है उसके साथ न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच होगा. तो इस वजह से हम कभी भी प्रोडक्ट्स के अंदर Sn2 मैकेनिज्म में ये नहीं देखते कि मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो रिटेन रही हो. मॉलिक्यूल की स्टीरियोकेमिस्ट्री इस प्रोसेस के दौरान जो है वो तब्दील हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट इज इन द हाइपोथेटिकल फ्रंट side transition state, both the nucleophile and the leaving group would have to overlap with the same lobe of the p orbital. अगर ट्रांजिशन, अगर जो है वो मॉलिक्यूल की जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है उसमें चेंज ना आए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो रिटेन रहे, तो ये सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त पॉसिबल है जिस वक्त इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों जो है वो एक ही ऑर्बिटल के साथ जो है वह एक ही ऑर्बिटल की एक ही लोब के साथ बैक वक्त जो है वो अटैच होने की कोशिश करें. एंड वी नो इट इज नॉट पॉसिबल because an orbital can have maximum 2 electrons in it. If already, if the leaving groups electrons and incoming nucleophiles electrons accumulate in the same lobe, then it is against the laws of electronic configuration, or it leads to the instability of molecule. ठीक है. तो ये पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे हम देख रहे हैं filled orbital of nucleophile, empty sigma star orbital of carbon leaving group bond, new sigma bond being formed इस जगह पर, and p orbital on the carbon atom, old sigma bond being broken, and as a result product is produced. The backside mechanism involve the maximum amount of overlap throughout the course of reaction. ये जैसे हम लोगों ने जो है वो देखा था, ऐसी सिचुएशन में न्यूक्लियोफाइल के पास मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जिसकी मदद से वो मैक्सिमम ओवरलैपिंग जो है वो कर सकता है. On the other hand, during the transition state, the three non-reacting substituents and the central carbon are approximately coplanar. They will be exactly coplanar
if both the entering and the leaving group are the same. यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ट्रांजिशन स्टेट में हम लोग देख रहे हैं कार्बन एटम और इसके साथ जो है वो these substituents that are not participating in chemical reaction are attached with the central atom, while the incoming nucleophile is attaching from one side and the leaving group is leaving from the other side. And it is possible only when the transition state, the why and it is possible only if the in transition state carbon atom have planar configuration, so that incoming nucleophile and leaving group would have equal opportunity for incoming and leaving. Here you may be confused with this word. There will be exactly coplanar if both the entering and leaving group are the same. ऐसा जो है वो आमतौर पर होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर सेम ग्रुप ही जो है वो इसके अंदर दोबारा एंटर हो रहा होगा तो ऐसी सूरत हाल में जो है हमें पता भी नहीं चलेगा कि केमिकल रिएक्शन जो है वो हुआ है, सिवाय इसके कि हम लोग जो है वो स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो उसकी चेक करें, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो सेम होगा तो ऐसी सूरत हाल में इन दोनों के दरमियान जो कंपटीशन है, यानी ये रिएक्शन तब ही फॉरवर्ड होता है अगर इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इज मोर स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ द लिविंग ग्रुप. If incoming nucleophile is weaker or have equal strength than the leaving group, then it will not be in favor of chemical reaction to proceed. ठीक है, बहरहाल अगर ये दोनों सेम हो तो ऐसी सूरत हाल में if both of these are same, then this structure will be a coplanar. All substituents carbon atom will all be in the same plane. ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है एविडेंस. एविडेंस सबूत के लिए हम लोग लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि इज देयर एविडेंस दैट Sn2 reactions occurs in actual. ठीक है, तो इस मकसद के लिए हमारे पास डिफरेंट एविडेंस जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें से एक के लिए हम लोग जो है वो काइनेटिक एविडेंस का नाम देते हैं. व्हाट इज काइनेटिक एविडेंस? वी ऑब्जर्व द reaction rate with different concentrations of substrate molecule and the incoming nucleophile, and from that we find the chemical kinetics. Since both the nucleophile and substrate are involved in the rate determining step, the reaction should be first order in each component and second order overall. कि अगर इसके ऊपर भी रेट ऑफ इसकी कंसंट्रेशन पर भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, एंड रिएक्शन इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ वाई, एंड अ लीनियर ग्राफ is obtained in this situation, it represents that rate of reaction is for have first order for both reactants, and overall rate of reaction would be second order rate of reaction. इसके रेट ऑफ रिएक्शन को इसके रेट ऑफ रिएक्शन के साथ जो है वो सम अप कर देंगे, ठीक है. ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन जो है वो होगा. इट मस्ट बी रिमेंबर्ड that this is not always the same as the second order. इसमें ये है कि बाज़ औक़ात जो है ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस जो हैं वो होती हैं. नोट दैट द टू in Sn reactions, note that two note that two
in Sn2 stands for the bimolecule. If the large excess of nucleophile is present, if it is the solvent, the mechanism may still be bimolecular, although the experimentally determined reaction kinetics would be फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि जिस वक्त एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, ऐसी सूरत हाल में रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द रिएक्टेंट दैट इज इन लेसर क्वांटिटी। और यूं महसूस होता है कि जैसे ये रिएक्शन जो है वो चूंकि एक ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, इस वजह से ये रिएक्शन जो है वो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, while in actual this reaction is a bimolecular reaction। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखते हैं रेट in this type of situation whenever nucleophile is solvent, whenever nucleophile is solvent, ऐसी सूरत हाल में रेट ऑफ रिएक्शन के लिए हम लोग जो इक्वेशन लिखेंगे उसमें हम लोग जो है वो रेट इज इक्वल टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो लिखेंगे। ठीक है, बज़ाहिर इससे ये पता चलेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, while in actual it is depending on the concentration of both। However, the second reactant is in so much or in so much higher quantity that rate of reaction is depending only on the lesser quantity reactant। These type of reactions are known as pseudo first order reactions। ठीक है, तो ऐसे reactions को हम लोग जो है वो pseudo first order का नाम देते हैं। Pseudo mean, as you know, it is a false, that these reactions seems first order reactions, while in actual these are second order reactions। much more second evidence, हम evidence का जिक्र कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारे पास है much more evidence is obtained from the fact that the mechanism predict inversion of configuration when the substitution occur at the chiral carbon, and this has been observed many times। ठीक है, कि इसके सबूत में, इसके एविडेंस के तौर पर एक बहुत बड़ा एविडेंस हमारे पास जो है वो क्या बनता है, वो है inversion of configuration। What is inversion of configuration? Inversion of configuration means stereochemistry of molecule change। ठीक है, and it has been observed many times। This inversion of configuration that proceed through transition state 1 is called Walden inversion। This is known as Walden inversion and was observed long before the Sn2 mechanism was formulated by Hughes and Ingold। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग जो है वो वाल्डन इन्वर्शन का जिक्र करते हैं। व्हाट इज वाल्डन इन्वर्शन? व्हाट इज वाल्डन इन्वर्शन का हम लोग जो है वो जिक्र करते हैं। वाल्डन इन्वर्शन, Walden presented a number of examples in which inversion must have taken place। For example, plus मैलिक एसिड, ये हमारे पास इसका स्ट्रक्चर जो है वो दिया गया है, ये हमारे पास जो है वो मैलिक एसिड का स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जांपल, प्लस मैलिक एसिड 2 से रिप्रेजेंट किया गया, could be converted to plus chlorosuccinic acid by thionyl chloride and to negative chlorosuccinic acid by phosphorus pentachloride। कि जब हम इसकी क्लोरीनेशन करवाते हैं, क्लोरीनेशन करवाने के लिए अगर हम लोग थायोनाइल क्लोराइड को यूज करें तो ऐसी सूरत हाल में इसकी कॉन्फ़िगरेशन रिटेन करती है। जिस साइड पर पहला न्यूक्लियोफाइल अटैच था, सेकंड सिचुएशन में भी उसी पर न्यूक्लियोफाइल जो है वो अटैच है। while whenever we perform chlorination with the help of another chlorinating agent, that is phosphorus trichloride, in this situation we observe change in configuration, that is chlorine attacks on the
opposite side of the leaving group. तो इसकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग जो है वो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। बनने वाले कंपाउंड को हम लोग जो है वो क्लोरोसिक्सेनिक एसिड का नाम देते हैं। पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइंस के मतलब आपको स्टीरियो केमिस्ट्री के मतलब जो है वो बताया जा चुका है। बहरहाल one of these must be an inversion and the other a retention of configuration। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसमें इस मॉलिक्यूल के मुकाबले में अपोजिट साइड पर क्लोरो लगा है और इसमें जो है वो उसकी सॉरी इसकी सेम साइड पर जो है ये ग्रुप लगा है और इसमें अपोजिट साइड पर ये ग्रुप जो है वो लगा है। तो इनमें से किसी एक के अंदर जो है वो इन्वर्शन हुई और किसी एक के अंदर जो है वो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हुई है। बट द क्वेश्चन इज which is which? The sign of rotation are of no help in answering this question since rotation need not be related to configuration. Another example is discovered by Walden is formation of 3 from 4। ये हमारे पास ये मॉलिक्यूल है जिसमें क्लोरो ग्रुप जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर मौजूद है। Whenever we change this chloro group with the help of KOH, in this situation we observe inversion, that is incoming nucleophile has entered from the opposite side of the leaving group. On the other hand, whenever Ag2O is used, in this situation we observe that incoming nucleophile is entered from the same side where living group was present. It suggests both these type of reactions have different chemical reactions or different mechanisms. If both would have the same mechanism, then the configuration of the both products should be same। और इसकी explanation के लिए for explanation of this ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम जो है वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A series of experiments designed to settle the matter of exactly where inversion take place। अब ये जानने के लिए that where inversion is taking place, different chemical reactions were performed and these reactions were performed by Phillips and Kinneon and co-workers। In 1923, Phillips carried out the following cyclic based on 1 phenyl 2 propanol। ये रिएक्शंस जो हैं वो करवाए गए। इन रिएक्शंस के नतीजे में प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों सूरतों हाल में प्रोड्यूस होने वाले कंपाउंड्स जो हैं वो सेम हैं बट विद द डिफरेंस एंड दिस डिफरेंस is in the optical activity of the molecule। Whenever tosyl chloride is used in first step and in second step this tosylate is converted into ether, in this situation we observe that optical activity changed from positive to negative। It means configuration of molecule is changed। ठीक है, और फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि वेन एवर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू टोसाइलेट, इन दिस सिचुएशन configuration retains as optical activity was positive before the chemical reaction and after the chemical reaction it was also having the same sign। Well, however, whenever this reaction is performed with the help of KOH and in the second step ethyl bromide, we observe produced product has optical activity with positive sign। It means configuration of molecule has changed during this process। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि there are different steps। Step 1 is known as A, step 2 or path is known as B, this step is known as C and this step is known as D। We observe
that configuration, we observe that optical activity do not change. In reaction A, it remains positive with positive sign. After in reaction B, it is changed. It means inversion is going on, or a process change in configuration is going on in process B. जबकि हम लोग जिस वक्त रिएक्शन सी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसके नतीजे में भी इसमें मैं वो मेंशन करना भूल गया, तो यहाँ पे वैल्यू जो है वो खैर हम अभी मेरे पास इस वक्त नहीं है। विकास है, हाँ चार्जिंग जरूरी होगी। अच्छा, तो हम लोग जो है वो देख रहे थे, तो इसका मतलब है ए सी और डी के प्रोसेस के दौरान जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज नहीं आता, और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज जो है वो सिर्फ और सिर्फ बी स्टेप के दौरान जो है वो आता है। तो इसको हम लोग जो है वो देख लें। एक्सप्लेनेशन इन दिस साइकिल, one phenyl 2-propanol is converted to its ethyl ether by two routes. One route is known as path A B, जो अभी हम लोगों ने देखे, और दूसरे पाथ के लिए हम लोग जो है वो सी डी का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। In case of route A B, configuration change from optical activity change from positive to negative, or configuration change from positive to negative, while in case of CD, configuration remains the same. Therefore, at least one of the four steps must be an inversion. It is extremely unlikely that there is inversion in step A, C, or D. Since in all these steps, the CO bond is unbroken, and in none of them could the oxygen of bond have come from the reagent. ठीक है, अगर रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी तो ऐसी सूरत हाल में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है ये ब्रेक नहीं होगा, और अगर इन्वर्शन होगी तो ऐसी सूरत हाल में ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होगा और इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो अपोजिट साइड से अटैक करेगा। देयर इज देयरफॉर अ हाई प्रोबेबिलिटी that A, C, and D proceeded with retention of configuration, leaving B as the inversion. ठीक है, number of other such cycles were carried out, always with non-conflicting results. और इसी तरीके कार से these experiments not only definitely showed that certain specific reactions proceed with inversion, but also established the configuration of many compounds. Walden inversion has been found at primary carbon atoms by a use of chiral substrate containing a deuterium and the hydrogen atom at the carbon atom bearing the leaving group. ठीक है, तो प्रोसीजर क्या अडॉप्ट किया गया है वाल्डन इन्वर्शन को चेक करने के लिए? प्राइमरी कार्बन जो है, प्राइमरी कार्बन एटम जो है उसकी जगह पर कायरल सबस्ट्रेट जो है वो इस्तेमाल किया जाए, और उसके साथ जो है ड्यूट्रियम जो है वो इस्तेमाल किया जाए, एंड अ हाइड्रोजन एटम एट द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप. Inversion of configuration has also been found for Sn2 reactions proceeding in the gas phase. High pressure mass spectrometry has been used to probe the energy surface for gas phase Sn2 reactions, which have two transition states, a loose transition state and a tight transition state. इसके मतलब हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में किसी जगह पर जो है वो डिस्कस करेंगे। और उसके बाद Sn1 का मैकेनिज्म, Sn1 mechanism, this reaction is based in two steps. Most ideal inversion of Sn1 mechanism, substitutional, nucleophilic, unimolecular,
consists of two steps. Once again, possible charges on the substrate and the nucleophile are not shown. ये वैसे ही अच्छा, यहाँ पे आपको बता दिया जाए कि ये लेक्चर जो प्रिपेयर किया गया है, दिस लेक्चर is mostly prepared from organic chemistry book written by Jerry March. And if you want to get these original material, you can study this book, that is Organic Chemistry, written by Jerry March. I have already provided the soft copy of this book to your class. In first step, we observe that substrate molecule breaks down into positively charged ion and negatively charged ion. And this is a slow step. It means it is a rate determining step. Only one type of molecule is participating in this step. Therefore, rate of order of reaction is 1, and rate of reaction depends upon only the concentration of substrate. In the second step, positively charged ion or carbonium ion attacks or reacts with the negatively charged nucleophile, and as a result product is produced. This is fast reaction. This is fast step, and it is not included in the rate determining equation. First step is slow ionization of substrate and is the rate determining step. Second is a rapid reaction between the intermediate carbocation or carbocation and the nucleophile. Reactive nature of carbocation can be expressed by its electrophilic character or electrophilicity. जितनी electrophilicity ज़्यादा होगी, उतना ही reaction के rate of reaction के fast होने की possibility जो है वो बनेगी. Next, in general, a good nucleophile. A good nucleophile is characterized by having a high value of electronegativity and low value of chemical hardness. ठीक है, गुड न्यूक्लियोफाइल के किस बुनियाद पर कैरेक्टराइज किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल हार्डनेस. Effect of substitution has been studied in the context of superelectrophilicity, where carbocations are generated in superistic media. In Sn1 mechanism, ionization of the leaving group to form the carbocation is always assisted by the solvent. ठीक है, rate of reaction is greatly affected by the polarity of solvent, because increase in polarity of solvent facilitates the ionization of the substrate molecule or the formation of carbocation. Therefore, rate of reaction will also depend upon the polarity of the solvent. ठीक है, और इसके बाद है largely recovered by the solvation of R positive and X negative. Next, for example, ionization of tertiary butyl chloride to tertiary butyl carbocation and chloride in the gas phase without a solvent requires 150 kilocalorie per mole in the absence of solvent, but in presence of solvent and reaction take place at a very high temperature. While in presence of solvent, this reaction occurs at 20 kilocalorie per mole. It means energy is less energy is required in presence of solvent. It means the solvent facilitates the chemical reaction. Difference is solvation energy. What is solvation energy? Whenever a solute is dissolved in solvent, energy is released or absorbed. Amount of energy released or absorbed during solution formation is known as solvation energy. In cases where the role of the solvent is solely to assist in departure of the leaving group from the front side, that is where there is complete absence of
back down Sn2 participation by solvent molecule. The mechanism is called limiting Sn1. तो इसके लिए हम लोग जो है इसकी एनर्जी डायग्राम को देखते हैं। इसमें ये हमारे पास एनर्जी ऑफ सबस्ट्रेट है एंड व्हेन एवर न्यूक्लियोफाइल अटैक्स इन द फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि ये लीविंग ग्रुप जो है वो लीव कर जाएगा और लीविंग के प्रोसेस के दौरान बनने वाली जो ट्रांजिशन स्टेट है इसे हम ट्रांजिशन स्टेट 1 का नाम जो है वो दे देते हैं। Transition state 1 has higher energy or have highest energy during the process. ठीक है, whenever leaving group leaves the substrate molecule and carbocation is produced, this carbocation is stabilized due to hyperconjugation or resonance, and as a result energy of this carbocation is less as compared to the energy of first transition state. In the second step, nucleophile attack on this carbon atom, and as a result, second transition state is produced, and this transition state has higher energy as compared to the reactants. However, this energy is less as compared to the first transition state. And in the end, products are produced, products have less energy as compared to the reactants. And here is reaction progress, and this shows the energy. Next, there is kinetic and other evidence that in pulling the leaving group X away from Rx, two molecules of protic solvent form weak hydrogen bond with X. It is representing about the effect of solvent. Effect of solvent for the formation of carbocation. Solvent molecules Solvent molecules attracts the leaving group and detach it from the carbon atom. As a result, it converts into carbocation. A single molecule is participating in this step. Therefore, rate of reaction depends upon only on the concentration of substrate. And looking for evidence for the Sn1 mechanism, first thought is that it should be first order reaction followed by the rate law. कैसे first order reaction होना चाहिए? It should be first order reaction because only rate of reaction is depending upon the concentration of substrate. Next हम लोग जो है slow step involves only the substrate. The rate should be dependent only on the concentration of substrate. Although the solvent is necessary to assist the process of ionization, it does not enter the rate expression. और उसकी reason, we know the reason because it is present in large excess. बहुत ही high concentration में, huge concentration में solvent मौजूद होता है, therefore it do not participate in the rate of reaction. However, it facilitates or for the process of however it facilitates process of ionization. However, the simple rate law given in equation 10.3 is not sufficient to account for all the data. This equation is not completely expressing the reaction rate. This is not expressing the it is not expressing reaction rate completely. उसकी रीजन हम लोग देखते हैं यहाँ पर. In many cases are where pure first order kinetics are followed, but in many other cases, in many other cases more complicated kinetics are formed. We can explain by taking into account the reversibility of the
फर्स्ट स्टेप। ठीक है, ये नेक्स्ट पेज पर जो है वो दिया गया है। द एक्स फॉर्म्ड इन दिस स्टेप compete with y for the cation and the rate law must be modified as follows। ये हमारे सामने इसका रेट लॉ बनता है। इट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। इन दिस रिवर्सिबल प्रोसेस Rx or substrate ionizes into R positive and X negative, are positive and X negative. While in second step, the incoming nucleophile attacks with the carbocation and its rate is K2 and it convert into RY। यहाँ पे देखा जाए तीन रिएक्शन हो रहे हैं। फर्स्ट रिएक्शन द इज रिप्रेजेंटेड बाय rate of first reaction is represented by K1 and rate of second reaction, that is reversible reaction, is represented by K minus 1 and second rate of reaction is represented by K2। Overall rate of reaction is K1 K2 into concentration of substrate, concentration of incoming nucleophile divided by K minus 1 concentration of leaving group plus K2 concentration of Y। At the beginning, ये इसकी explanation है। At the beginning of the reaction, when the concentration of X is very small, K1X is negligible compared with the K2Y and the rate law is reduced to equation 10.3 जो हम लोगों ने इस जगह पर देखी थी। ठीक है, और उसके मुकाबले में जब क्या होगा, एंड इंडीड Sn1 रिएक्शन जनरली डू डिस्प्ले सिंपल फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इन देयर इनिशियल स्टेज। इनिशियल स्टेज में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो करती हैं। मोस्ट काइनेटिक स्टडीज ऑफ द Sn1 रिएक्शन fall into this category। In the later stages, the Sn1 solvolysis X become large and the equation 10.4 predict that the rate should decrease। ये ओवरऑल जो है वो फिर हमें बताएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन एनर्जी ऑफ रिएक्शन। आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हैं कि इन प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट एनर्जी ऑफ रिएक्शन इज लोअर। रेड कलर से इसे रिप्रेजेंट किया गया। हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज energy of reaction is higher than that of second stage and it is also a Sn2 मतलब हम लोग जानते हैं सिंगल स्टेप है, तो Sn2 में भी हम लोग जो है वो देख रहे हैं कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में रेट ऑफ रिएक्शन जो ग्रेटर जो है वो एनर्जी की जरूरत पड़ती है और इसके लिए जो है वो लेस एनर्जी की जरूरत जो है वो पड़ती है। तो आज का लेक्चर जो है वो मैं यहीं पर कंप्लीट जो है वो कर रहा हूं और उसके बाद जो है वो आज का रिएक्शन जो है वो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करेंगे। अब इस जगह पर मैं अपनी क्लास को जो है वो रिकॉर्डिंग को जो है वो ऑफ कर दूंगा और रिकॉर्डिंग को ऑफ करने के बाद आप लोगों के पास चंद मिनट होंगे कि आप उसमें मेरे साथ कोई भी चीज़ डिस्कस जो है वो करना चाहें तो वो आप जो है वो मेरे साथ डिस्कस कर सकते